Hello viewers, so we complete 1 year of Smoothie Saturdays. We did already on 25th May. So thank you so much for being a part of this journey. Now, let me tell you what are the 3 reasons why I started Smoothie Saturdays. There are short films which release every Saturday at 10 a.m. on my YouTube channel Mr. C. First reason was of course to spread social awareness by making these short films that are talking about socially relevant or relatable issues. Secondly, and more importantly, it was to spread empathy among people. By portraying various people in different situations, we might not understand them before, but I hope that some people have understood the others now. And thirdly, but not lastly, to have fun. I told my friends that anyway we meet up every weekend just to chat. Sometimes we talk sense, sometimes we just talk nonsense. So instead, why not do something productive? Let's shoot, let's have fun, and that's actually what it's been like. We literally work like crazy, yes, but we are actually like partying and chilling all the time while shooting. So I don't see what's the problem in it. So, for this 1 year special episode, what are we going to cover? First and foremost, we have an awards ceremony. So, there were going to be 12 categories from Best Script, Best Actor, Best Actress, and I let the public, the viewers vote. And on the basis of the viewers' votes, we have come to 12 winners. Secondly, and lastly, some of the cast and crew members will be sharing their experiences of working on the Smoothie Saturdays and which are their favorite Smoothie Saturdays. But first and foremost, let us rewind and take a glimpse at the 50 plus Smoothie Saturdays released on the channel so far. The entire journey of Smoothie Saturdays in this last 1 year. Smoothie Saturday. Have a smoothie and forget gloomy. What? Wow! जोर से तालियां बजाओ! ओ हेलो भाई साहब, क्या कर रहे हो आप ये? आपको शर्म नहीं आता ये गंदगी फैलाने में? मुझे शुरुआत करना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। हम शुरुआत करेंगे तो और लोग भी शुरुआत करेंगे। सही बोल रहे हो। Ashok, I'm not going to let you beat me up today. Enough is enough. By 2025, 1.8 billion people will be living in regions with absolute water scarcity. आप बहुत कुछ कर सकते हो. Turn off taps and check for the leak. Stop using the toilet as your ashtray or waste basket. Take shorter showers and baths. मुझे उसका सोशल नेटवर्किंग अकाउंट हैकिंग करना है और उसके बाद उसके अकाउंट में क्या पोस्ट करना है. You have shown complete disregard for school rules by your posts on a social networking site. You stand rusticated. I made a bucket list, of what I want to do in my life when. क्या है तेरे बकेट लिस्ट में? 23, going and working abroad. माँ सैलरी चला गया. कहाँ? या. तू सिर्फ तेरा टमाटर और वो चिगी से ही खाना ऑर्डर करते रहे. And then, at 30, I'd want to get married to this beautiful, beautiful young girl. ऐसे दिन आ गए, शादी.com से भी रिप्लाई नहीं आ रहा है. Age is just a number. Isn't this a dating app? अरे baby, it's Why just. do you have a dating app in your phone? ये कैसा रिलेशनशिप था? एक दिन का रिलेशनशिप, एक दिन में ब्रेकअप. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. जय महिला छाता लेके नहीं आ सकता ना. This is stupid. Give me a clean one. Arey, I have taken it from other customers and given you. Arey, don't worry. Anger. Control it.
breakups are mostly always bad, but sometimes they seem worse in the initial phases. I want to get married next week. Meet my girlfriend, Procrastination. I love her. No, Sam. Don't polish your shoes. You'll waste exactly 10 seconds of your life. Okay, thanks. Red and white sari symbolizes Bengali women in Bollywood. Oh yeah, we love our red and white saris. But I also like to wear dresses, shorts, jeans, and pretty much anything really. আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি কিন্তু একটু বাংলা শেখো বাবু। Sindhis are only into business. Money, money, money. It's not funny, 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 eh? We Sindhis are not always earmarked for business. Mr. C in the sea. Uima. What an incredible journey it's been, right? Thank you, viewers, and thank you to my team. Also, this journey really helped me become an Amazon influencer. So, although I haven't really started recommending products yet, but I still feel really humbled and grateful. And now, let's come to the main part of this video, the award ceremony. 12 categories, 12 winners. Let's see who makes the cut, all decided by you viewers, the public. So, the nominees for the first category, Best Talent besides acting, are But today, we will try to make a bookmark. Here are our bookmarks. शायद यही चाहती थी कुदरत, बट इस सब में बराबर सुख दर्द। शायद यही चाहती थी धरती की सबको मिले जीने का मौका और मरने का भी। Music is my passion, and I love spending time singing and playing the keyboard and melodica. And the nominees for the best scriptwriter are स्मोक मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं तो खुद स्मोक कर रहा हूँ, आपको थोड़ी बोल रहा हूँ करने के लिए।
अजीब है। हमें कभी कभी रियलाइज नहीं होता कि हमारा एक पर्सनल एक्शन बाकियों को एंड इवन क्लाइमेट को कितना एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। Oh my god, you're polishing your shoes. I knew you were cheating on me with her. Yes, I'm cheating on you. Procrastination with productivity. Huh, just leave. I'll never return to your life again. Don't. What is your idea of fun, by the way, huh? What? I love reading, playing with my pet. Listening to music. You have run away secretly with Rita and got married. You know, this time your gossip mills have churned out true news. This is my wedding ring. But you know what? I didn't feel like inviting you at my wedding because you're not worth it. Well. What about Taurus, my folks? I heard you all are very materialistic. And if there was a fire at your house, you'd first run to go and get your jewels. Not at all. We place family first, and we are the happiest when we see our loved ones happy. Okay. And the nominees for the best young actor are. I also want to play. Have you forgotten your music grades in school, Bablu? This is not your talent. You go study. But mom, even Galu is not studying. I have already completed my lessons and this is the time for me to practice piano. Yes. Ma'am, you remember you were telling us about the music competition coming in December and you asked us whoever wants to participate in it? Ma'am, I think you should once listen to Ronak sing. He has such an amazing voice. So you heard that story too? Well, actually it does get awkward singing in front of people who might be just there to judge me after all, you know. It's better to sing just for myself when I'm alone, don't you think? I'm performing for myself and you're in front of me, so that's fine. And then who knows? Tomorrow I may have like thousands of audience. Yes. अरे दादी, आप क्यों ये सेस कर रही है? गेम तो मैंने जीता। And the nominees for the actress with most chutzpah are. चल बे, कंजंक्टिवाइटिस की बीप किया। तेरी आंखें एकदम नॉर्मल दिख रही है, क्रॉस आइड एज यूजुअल। अरे आज कॉलेज में तेरा रैंप वॉक है ना? हाँ आज है, इसीलिए तो रेडी हो रही हूँ। कितनी सुंदर लग रही हो, किसी की नजर न लग जाए। So, what do you think about him? What do you mean? Marriage? Marriage? Yes. Mom, I'm only 18. Well, I got married when I was 18. Stop the melodrama. सॉरी ये तो रियलिटी है ना, बस पोते की याद आ गई। I have a secret. Would you like to know about it? This one hour that I get to remix songs on the console, remix is my life from dull to sprightly. So folks, no matter how busy you are, never be busy to pursue your passion. Make sure your life is a remix too.
for the actor with the most chutzpah, that is chutzpah, is... हाँ, एक मिनट, हमारे तुम पढ़ो हमारे। क्या फर्क पड़ता है? कितना सुधर गया है मेरा जीवन, कितना सुधर गया है। अब मैं जी के क्या करूं? बहुत गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या? What, डॉक्टर? I have concluded. मैं जान चुका हूँ आपका क्या समस्या है। शोला जो फड़के दिल मेरा धड़के होई होई। So Bengali men have a lot of shola and they only wear chola, right? This is too dirty. Give me a clean one. Are, I have taken it from other customers and given you. Are, don't worry. How many you? How much do you? This is too dirty. नहीं होगा। Never. आपने authority से करो ना। ना एकदम मेरे को बोलते हैं ना। अरे बात And the nominees for most glamorous actress are... For the most well-groomed actor are... And the nominees for Best Supporting Actress are... These films always take liberties with the story. असली तानाजी तो शिवाजी के लीडर थे, the unsung hero who led the charge. Even the movie relates the same story. Actually, इतनी खूबसूरती से इस कहानी को रिलेट किया गया है ना कि ऑडियंस तो एकदम मंत्रमुग्ध और विस्मित हो गए। बबलू, 11 out of 100 in maths, 35 out of 100 in geography. Only 3 subjects passed. बबलू! हाँ, मिल गया मुझे। कल रात में पार्टी से लेट आई थी ना, शायद मैंने इधर ही रखा था। तू विद्या जो पुट्टू आई ना, God bless you. We haven't seen you from such a long time. कित्थे आई तू आजकल? And the nominees for the Best Supporting Actor are... Nita! Nita, open the door! Nita, open the door! Nita! Nita, we are not done yet! डेविड और मोनिका की शादी करा देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। वो सबसे अच्छा होगा। हाँ, सबसे अच्छा होगा। डेविड भी वैसा ही है, पागल है। हाँ, चलो इनको ब्लाइंड डेट में कर देते हैं। मोनिका भी पागल है। हाँ, मोनिका भी सिंगल है, डेविड भी सिंगल है। एक साथ कर लेते हैं। एकदम सुपर्ब आइडिया। दोनों ही साइको हैं। हाँ। बबलू! Bablu, I'll kill you! I'll not spare you today! I'll see what I do to you! I'll kill you! I'll kill you! I'll kill you! तू
मुझे उसका सोशल नेटवर्किंग अकाउंट हैकिंग करना है और उसके बाद उसके अकाउंट में क्या पोस्ट करना है। किसका अकाउंट, वो तू मुझ पे छोड़ दे। Do you know what your darling son is doing? Wasting money, throwing money all the way, going to the malls and God knows what other places, and no studies and nothing, and he has no focus in life. And the nominees for Best Actress are... You love wearing red and white sari? Oh yeah, we love our red and white saris. But I also like to wear dresses, shorts, jeans, and pretty much anything really. As I climb the steps of life, I am confronted with an obstacle at every instance. And yet, I have the candle of hope burning in my hand. Obstacle 1, vitiligo. Many think that vitiligo leads to depression and anxiety, hampering personal and professional life. And while this is true for many people, I am fortunate that I do not have depression. Arey, no. Don't brush now. Go, eat the cake first. Ah, cake? But brush? No. Okay. Cake! Mission accomplished. राम राम बेटा। क्या हो गया आंटी? ये कोई खाना होता है बेटा? क्या पाव है, पत्ता है? ले। राजमा चावल खाना चाहिए, तब तो ताकत आएगा। वो बात तो है। अब ये तेरा दोस्त स्ट्रगल कर रहा है ना, इसीलिए तुझको मिर्ची लग रही है। पर देख बेटा, ये लीड रोल्स में भी ऐसा तो नहीं है कि कोई आउटसाइडर नहीं है। हाँ, इतनी एंटी टेक सैवी भी नहीं हूँ मैं। मुझे मालूम है कि खाना लैपटॉप स्क्रीन के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता। मालूम है मुझे। And the nominees for the Best Actor are... मुझे एनवायरनमेंट के बारे में मत सिखाओ, मैं सीखा हुआ हूँ। जानते हो तो फिर गंदा क्यों कर रहे हो? पान खाएंगे? खुद अपने मुंह में ठूसो पान। बेवकूफ आदमी। क्या देश प्रेमी है। चले चलो। What? I'm sorry, I can't be with you. ये कैसा रिलेशनशिप था? एक दिन का रिलेशनशिप, एक दिन में ब्रेकअप। So, according to you, Mr. Stereotype, I must be at Hawaii Islands right now. Bro, wake up to reality. It's pandemic time, and I, or nobody for that matter, will want to travel at this point, okay? Ouch! Ooh, touch me not, you evil thing! Oh, my finger burns so bad! Yes, we Sindhis are not always earmarked for business. We can very well establish a career in academics as well, just like me. So come on, guys. इस घर में ना शांति नहीं है। पहले तो वर्क फ्रॉम होम करो, फिर वर्क एट होम करो। It's a dog's life नहीं, it's a rabbit's life. Truly. हाँ, इस घर का असली बॉस तो मैं हूँ। Yeah. Where are my girlfriends? There are supposed to be 10 of them. Shh, I have a secret too. And the nominees for Best Movie Saturday are... I made a bucket list, of what I want to do in my life when. क्या है तेरे बकेट लिस्ट में? 23 going and working abroad. माँ सैलरी चला गया। कहाँ? या तू सिर्फ तेरा टमाटर और वो चिगी से ही खाना ऑर्डर करते रहे। And then
At 30, I'd want to get married to this beautiful, beautiful young girl. ऐसे दिन आ गए, शादी.com से भी रिप्लाई नहीं आ रहा है. Age is just a number. Isn't this a dating app? अरे baby, it's Why just. do you have a dating app in your phone? I'm deleting it. Right now. आज का गप है मॉडर्न डेटिंग पर। मिलाते हैं दो कपल से, एक जो लंबे रेस का घोड़ा है और एक जो शुरू में ही खुश। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। जय महिला, छाता लेके नहीं आ सकता ना? सॉरी बेबी, चलो ना। पलट तू पलट। अरे चंपा, तुम पीछे थी, मुझे लगा तुम आगे। Oh please, don't tell me you mistook that girl for me. अरे सिमरन, चंपा, रुक यार। शोला जो फड़के दिल मेरा धड़के, होय होय। So Bengali men have a lot of shola and we only wear chola, right? No, red and white sari symbolizes Bengali women in Bollywood. Oh yeah, we love our red and white saris. But I also like to wear dresses, shorts, jeans, and pretty much anything really. Intense competition, Rasgulla competition. আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি, কিন্তু একটু বাংলা শেখো বাবু। Time to sleep. When is it not time for you to sleep? Stupid human. What a waste of life. चीजों ने पॉटी किया है, जा साफ कर। यार ये लाइफ तो पॉटी बन गया है। पहले चीजी का पॉटी साफ करो, फिर खुद का पॉटी साफ करो। अरे मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं कर देता हूँ। अरे तुम्हारी कमर में मोच आ जाएगा। हमारा तो डांस एलर्जी स्टार्ट हो जाएगा। तेरी लाइफ बड़ी सही है, हाँ? सुबह शाम रात से खाना पीना सोना पॉटी। वाह भाई, बाप का राज है। चल भाग, मुझे खाना खाने दे। चुप रह। इस घर में ना शांति नहीं है। पहले तो वर्क फ्रॉम होम करो, फिर वर्क एट होम करो। इट्स अ डॉग्स लाइफ नहीं, इट्स अ रैबिट्स लाइफ, ट्रूली। हाँ, इस घर का असली बॉस तो मैं हूँ। आदर्श सर कितने डर्टी है, सारा दिन पान चबाते रहते और थूकते रहते। ओ हेलो भाई साहब, क्या कर रहे हो आप ये? आपको शर्म नहीं आता ये गंदगी फैलाने में? मुझे एनवायरनमेंट के बारे में मत सिखाओ, मैं सीखा हुआ हूँ। जानते हो तो फिर गंदा क्यों कर रहे हो? पान खाएंगे? खुद अपने मुंह में ठूसो पान। क्या देश प्रेमी है। चले चलो, चले चलो, चले चलो। No, no, Sam. Don't polish your shoes. You'll waste exactly 10 seconds of your life. So, what does the word procrastination mean? It means the action of delaying or postponing something. But can you imagine, what if procrastination became your girlfriend or boyfriend? Meet my girlfriend, procrastination. Good morning, love. Time to wake up, huh? No, no, love. It's just 7:30. Put on the alarm for 7:45. Yeah, 7:45 alarm. Got it. फिर 8 का, 8:30 का अलार्म, 9 बजे का अलार्म। Where are you going? To take a bath. You don't need to take a bath. Okay, thanks. Not you evil thing! Oh, my finger burns so bad!
Hi everyone, this is DJ Nilashri. First of all, congratulations to Mr. C and to the entire team. And yes, we completed 1 year. And yes, it was a very, very good experience shooting for Multitasking, which is my episode, of course. And I really want to thank you, Samudra, my friend, for giving me this opportunity. And I just want to say that was my first experience in acting, and which showcased my real life of me DJing, and also the job which I do in the daytime. So yes, thank you so much, and I hope all of you liked the video Multitasking. Babe, please be in my shoes for a day. I would love to take a break. Just kidding, by the way. Do check it out on the YouTube channel Mr. C. And also, apart from that, congratulations to the entire team. And one of my other favorites is Exes Can Be Friends, which is something very unique, and one should actually follow that. We were so used to hanging out together, So used to talking about just about anything and everything that the entry of another person wouldn't make a difference. but slowly, over time, we realized that this is much beyond a romantic relationship. And yes, thumbs up to everyone. Thank you so much. ट्रीना दी ने जब सैटरडे स्मूथीज के वीडियोस शेयर करना शुरू किए तो समझ में नहीं आया कि अचानक ये हर सैटरडे ये क्या आता रहता है और ट्रीना दी क्यों भेजती है। देखा तो पता चला कि समुद्र के डायरेक्शन में कुछ शॉर्ट फिल्म्स बन रहे हैं और मतलब समुद्र ही ये सारा कुछ कर रहा है। देख के बड़ा मजा आया। ऐसे ही देखती रहती, अचानक एक दिन आया मोंटू दा का वीडियो और देखा तो रातों रात हमारे संजय दा यानी मोंटू दा फेमस हो गए। सर आओ बड़ा मजेदार था वो गंदगी ना फैलाओ, डोंट लिटर। मन में हुआ कि क्या इस तरह से थोड़ा फेमस हुआ जा सकता है। बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था, पिछले वीडियो में बताया था ना। तो ट्रीना दी को तो थोड़ा बहुत पता ही था, लेकिन समुद्र को तो नहीं पता कि मुझे एक्टिंग करना आता है और मुझे एक्टिंग करना पसंद भी है। अब ट्रीना दी क्या समुद्र को बताने वाली थी? ठीक से पता नहीं था कि क्या ये कुछ हो सकता है। मन में हुआ एक दिन मुझे समुद्र बुलाए और बताए कि मैम आई वांट टू शूट यू, कैन यू प्लीज़ कम। ऐसे ही सोच में दिन बीतने लगे और एक दिन जब मैं काम के सिलसिले में कल्याणी में थी तो ट्रीना दी का फ़ोन आया। ट्रीना दी ने कहा कि क्या आज तुम दोपहर को यहाँ आ सकती हो? तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो मैं थोड़ा बाहर रुकती हूँ ट्रीना दी। तो कहा कि ठीक है फिर अगले हफ्ते फिर एक दिन आओ। तो मैंने कहा क्यों ट्रीना दी? कहा नहीं, वो समुद्र एक फिल्म शूट करना चाहता है और वो तुम्हें लेना चाहता है। और ये सुनकर आई वाज सो एक्साइटेड। और मुझे साथ में ये भी कहा कि मोक्ष को भी लेते आओ। खैर अगले संडे पहुंच गए हम और मोक्ष। आई वाज सो एक्साइटेड। पहले दिन का शूट, पहले फिल्म। जाकर देखा तो हमारे मोंटू दा यानी कि संजय दा भी वहाँ पर थे और शाउन था और मोक्ष तो मेरे साथ ही गया था। हम लोग पहले ही शूट करने वाले थे मार्क्स मार्क्स मार्क्स। Action. I have got your e-report cards. Let me see. Action. Don't disturb. बहुत मजा आया। और इसके बाद मतलब शूटिंग के बाद अगर मैं बताऊं, सबसे मजेदार बात ये थी कि जब वीडियो देखा तो मेरे एक कान में इयररिंग और एक कान में नहीं है और
उसके बाद उस दिन इतना मजा आया था, आईपैड का पूरा लाइट चेहरे पर और हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन देन शूटिंग हो चुकी थी और उसको लेकर हमने इग्नोर किया। बबलू 11 out of 100 in maths, 35 out of 100 in geography, only 3 subjects passed. खैर शूटिंग भी था और बड़ा मजा आया, बहुत एक्साइटेड थी और बहुत बढ़िया ढंग से हम लोगों ने किया। फर्स्ट शूट था सो, और उसके साथ श्रीनादी ने बेहतरीन खाना खिलाया। शूटिंग विथ समुद्र इज सो रिलैक्सिंग। ही इज अ वंडरफुल डायरेक्टर, मतलब उसके साथ शूट करना इतना रिलैक्सिंग है, उसके साथ स्क्रिप्ट्स इतने रिलैक्सिंग है, वो इतनी अच्छी तरह से समझाता है एंड इज सो वेलकमिंग। मतलब अगर ये बोलो कि मुझे क्या मैं ऐसा करूं वैसा ना करूं, तो यस मैम, जैसा आप पसंद हो, तो ये इस लाइन को वैसे चेंज करूं, मैं तो चेंज करती रहती हूँ, थोड़ी बहुत हिंदी गड़बड़, थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम हो तो। ही इज़ ऑलवेज सो फ्री, और वो कहता रहता है कि हाँ जैसे भी हो मैम करो। और इस तरह से हमारा पहला शूट किया, सब लोग साथ मिलकर करना, ये जो शूट करना, छोटे छोटे फिल्म्स बनाना with messages and all that, it's really so inspiring. अब तक समुद्र ने जितने वीडियोस बनाए, मैं तो बोलूँगी कि मुझे ऑब्वियसली सबसे पहले वाला फिल्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, मार्क्स। इसमें सच में बच्चों के प्रॉब्लम को लेकर बताया गया है और मुझे वो बहुत डाउन टू अर्थ एंड बहुत रिलेटिव लगा। इसके अलावा मंटूदा का वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड एज इज जस्ट द नंबर, उसकी तो कोई मतलब तारीफ कम है। श्रीनादी सच अ वंडरफुल एक्ट्रेस, मजेदार, और मैं क्या बताऊं। तो कैसा है मेरे लिए बहू ला देना। हाँ बेटा, बहू चाहिए मुझे, बहू। एनीवे, थैंक यू समुद्र, थैंक यू श्रीनादी, आप लोगों की वजह से मुझे मेरे बचपन के शौक को पूरा करने का मौका मिला और आज कितने लोग मुझे देख रहे हैं। थैंक्स अदा, थैंक यू। Hey guys, I have been a part of Smoothie Saturdays since the end of last year, and I must say that it has been an amazing experience for me since it has given me a platform to showcase my script writing abilities. Joyanthi ma'am told me about this channel and that Sam was looking for a scriptwriter. Sam contacted me and offered me whether I was willing to join his team as a scriptwriter. Now this was an offer which I could not refuse. I have been a lover of literature and have been involved in writing since a very young age. I watched a couple of Smoothie Saturday videos after Joyanthi ma'am's video came out and I seriously loved them. I was keen on taking up this offer. Moreover, taking up this opportunity would give me a break from continuous indulgence in legal writing. Therefore, I took up the offer. I had a script in mind which took the form of the film The Art of Giving under the direction of Mr. C. When the video came out, I was amazed at its beautiful execution. अर्चना, जरा सुनो, इसमें तुम्हारे दोनों बेटों के लिए स्वेटर्स है। After that, I worked upon another script, Heal the World, which too was beautifully executed. ये लो खाओ। यार चाची, ये कौन खाएगा? तुम खाओगी? जल्दी खाओ, कॉलेज जाओ। चाची, मुझे नहीं अरे, लेट हो रहा है। रोज खाना बर्बाद करती हो, तो फिर इतना लेते क्यों हो? Later, I was also a part of a Smoothie Saturday video about things to do at home. Out of all the Smoothie Saturday videos, I have specifically kept 2 videos aside as my personal favorite. The first one being Superstition. Reason being Joyanthi ma'am's beautiful execution. अरे रुक, काली बिल्ली। माय गॉड, डरा दिया आपने। बिल्ली है, शेरनी है जो काट लेगा आपको। चलिए। अरे मत जा, काली बिल्ली बहुत अशुभ संकेत देती है। अरे बहुत शुभ है, मैं आपको दिखाता हूँ ना, चलिए ना। उफ, उस रास्ते से तो अब हम नहीं जाएंगे। तो क्या फ्लाई करके जाए? दूसरे रास्ते से जाएंगे, चलिए। And the second one, Don't Litter the Streets.
My journey with Mr. C has been an amazing experience, all because of the amazing and super friendly people in the team. I look forward to work with Mr. C in the future as well. Hi, I'm Shorna. I'm really proud to be part of the Smoothie Saturdays that Mr. C has on his YouTube channel. I've so enjoyed acting in and directing part of the series. It's been so exciting to send videos from here and watch them become a seamless part of a smoothie on Saturday, and to watch it traverse effortlessly across gender, race, class, and all kinds of different social issues that all of us really need to think about. I'm also very pleased that I'm able to share the videos here amongst my circle of friends, because there are many episodes that particularly deal with issues that NRIs also face. And we really want people to understand and know in India that we are leading lives here which are not very different from those lives that they are leading in India. As an NRI, I feel really included by Smoothie Saturdays. It's my way of connecting with my country, with India being part of it, and yet apart. Smoothie Saturdays definitely offers the most holistic philosophy of our lives now, be it online, in a book, in a game, in any kind of print media. You can see this right from the start of the series. Remember the first episode, Show Me the Money, Honey? And who are you? I'm her boyfriend. This is Nikita's boyfriend now. Boyfriend. And your name? My name is Xavier. What do you do? Biomedical. I want to be a doctor. Biomedical. Okay, and you want to be a doctor? Yes, sir. What we wanted to do was to promote a more just, non-racist, and non-sexist world through our videos. For the first episode, we thought, let's have a story working around the love marriage, arranged marriage scenario, the debate which is so familiar to all of us, but with also conversation around racism from an angle that perhaps we don't always think of. It was a bit mad, but it was fun to shoot it partly here in the UK and partly in India. I also directed parts of episodes which were shot in both the UK and in India. And of these, I think technology versus the family dinner would be a favorite, because it brings forth a message which is really close to my heart. Though it looks simple, but can you guess that this episode took simply ages to film? Substantial time was lost in setting up the action and reaction shots in a way so that there was light uniformity and so that there was no reflection of the seemingly hundreds of pieces of glass and bits of reflective surfaces around the room. There are too many good episodes for me to point to a favorite, but amongst these, a personal favorite must be Life is Too Short to Hate. Not only does Samudra and his teammates portray four friends out on a blind date and the wonderful flow of anger and friendship that goes back and forth between these four, but they really embody the emotions that we see there. It's really enthralling to behold. This is a must watch. Please do watch this. And it is particularly important because they are highlighting also the issue of bullying and how it can leave an impact on people many, many years after the episode has gone. He is the guy, Gina, who used to mock me in school as a fat guy. He is a sick person altogether. I am not going to sit with him anymore.
So please do watch this. Well, Mr. C, hats off! You've done it! Something really worth being proud about. And to you, the wonderful audience, thank you so much. Hello viewers. First of all, I want to congratulate Mr. C and his team for completing 1 year of Smoothie Saturdays. Wish you all the best and many more to come. আসলে সবকিছু শুরুরও একটা শুরু থাকে, আর আজকের এই স্পেশাল এপিসোডে আমি সেই আমার শুরুর গল্পটাই বলবো, কিছু মেমোরিজ শেয়ার করব। তো মিস্টার সিতে অ্যাক্টিং করার জন্য ত্রিনাদি আমাকে একদিন স্কুলে বলেছিল। তো আমার একটা অদ্ভুত ধারণা হলো যে যেহেতু এটা মানে স্মুদি স্যাটারডেজ আর স্যাটারডে করেই শর্ট ফিল্মগুলো রিলিজ হয়, তো আমি হয়তো এটা শুটিংটাও স্যাটারডেই হবে। এবং অদ্ভুত, আমি জানি না কেন এরকম একটা অদ্ভুত ধারণা আমার হয়েছিল, এবং আমি সেই অদ্ভুত ধারণার বশবর্তী হয়ে তো আমি রাজি হয়ে গেলাম। আমার ভুলটা পরের দিন ভাঙলো, ত্রিনাদি আমাকে বললো যে স্যাটারডে নয় সানডে করে শুটিং হয়, এবং ত্রিনাদি আমাকে সানডেই বলেছে, আমি সেটা একেবারেই শুনিনি। এবার আমি একটু দোটানায় পড়ে গেলাম, একটু দোনোমনো আমার ছেলেকে রেখে একটা গোটা ছুটির দিন আমি বাড়ির বাইরে থাকবো, এটা ভেবে আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমি ঠিক ডিসিশন নিতে পারছিলাম না যে আমি রাজি হব কি হব না। তো যাই হোক, বাড়ির সকলের উৎসাহে এবং আমার নিজের প্রচন্ড ইচ্ছে সেটা তো ছিলই, সেসব কারণে একদম সম্পূর্ণ নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স করব বলে আমি রাজি হয়ে গেলাম। এবং সেই রোববার দিনটা এলো, আমি সকালবেলা উঠে সেজে গুজে রেডি হয়ে আরো অনেকগুলো ড্রেস, অনেকগুলো চেঞ্জেস নিয়ে একটা ওলা বুক করে ত্রিনাদির বাড়ি চলে গেলাম। তখন তো শহরটা একেবারে অন্যরকম ছিল, মানে যাতায়াতটা এত তো কোনো রকম রেস্ট্রিকশন ছিলই না। যাই হোক, টেনশন ছিল, ভীষণ টেনশন ছিল, একদম নতুন একটা ব্যাপার করতে যাচ্ছি। ত্রিনাদির বাড়ি পৌঁছলাম এবং সেখানে পৌঁছে সমুদ্র যেভাবে আমাকে দেখে হাসলো এবং ত্রিনাদি ও সমুদ্র যেভাবে আমাকে গ্রিট করলো, আমার সমস্ত টেনশন কোথায় যেন চলে গেল। ওখানে আমার আরেক কলিগ পাপিয়া, ওর মেয়ে ছিল উপাসনা, আমার সাথে অ্যাক্টিং করেছিল। বাচ্চা মেয়ে, ভীষণ সুইট এবং প্রচন্ড ন্যাচারাল অ্যাক্টিং। যাই হোক, তো তারপরে আমাকে দুটো স্ক্রিপ্ট দিল। সেদিন দুটো শর্ট ফিল্মের শুট করা হয়েছিল, একটা হচ্ছে সুপার স্টেশন আর একটা হচ্ছে হাউ টু হ্যান্ডেল রিজেকশন। তো সেই দুটো ফিল্মের আমি স্ক্রিপ্ট পড়লাম, তারপরে শুটিং শুরু হলো। সারা দিন ধরে ভীষণ হইচই করে শুটিং, ত্রিনাদি এবং সমুদ্র দুজন মিলে আমাকে ডিরেক্ট করছে, বুঝিয়ে দিচ্ছে, যেভাবে আমি যা যা গন্ডগোল করছি সেগুলো ঠিক করে দিচ্ছে। দুজন মিলে প্রবল উৎসাহে সেই শুটিং চলছে। মানে একটা সাংঘাতিক মজার ব্যাপার এবং একেবারে একটা ব্র্যান্ড নিউ এক্সপিরিয়েন্স, ভীষণ আনন্দ হলো। কিন্তু এখানে যে জিনিসটা সবচেয়ে মজার সেটা হচ্ছে দুটো স্ক্রিপ্টে ছিল হিন্দি, আর আমি অসাধারণ হিন্দি বলি, সুতরাং ওই হিলেরিয়াস হিন্দি, প্রচুর ভুল, বারবার সেই ভুল শুনে সবাই মিলে একসাথে হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়া, এবং তারপরে আবার টেক টেক রিটেক রিটেক এইসব করে গোটা একটা দিন ধরে একদম মানে খুব সুন্দর একটা एक्सपीरियंस আমার হলো। एक्शन। अरे आग फड़कना बंद कर, इसका आज इंटरव्यू है। ঠিক আছে একদম ঠিক আছে। তো যাই হোক, সুপারস্টিশন রিলিজ করলো একটা স্যাটারডে এবং একটা অদ্ভুত নতুন রকমের এক্সপিরিয়েন্স হলো, ভীষণ জনপ্রিয় হলো, ভীষণ রকম মানে সকলে পছন্দ করলো রজনীদি যে রোলটা আমি প্লে করেছিলাম সেই রোলটাকে। আর যেটা সেই শনিবার দিনটা আমার মনে আছে, সারাদিন ধরে সমানে ইউটিউব খুলে খুলে দেখছি যে কজন ভিউয়ার্স হলো, কজন লাইক করলো বা কটা ডিসলাইক হলো, সেটাও হয়েছিল। তো সব মিলিয়ে একটা দারুণ মজা। আর সবচেয়ে যেটা মজা, রজনীদির যে ডায়লগটা খুব ভীষণ রকম সবাই বলতো, সেটা হচ্ছে ওফ। লকডাউনের মধ্যে বাড়িতে থেকে আমি আরেকটা স্মুদিতে অ্যাক্টিং করেছি, আর রিসেন্টলি আমার ছেলে আরুণ ও করলো क्योंकि सास भी कभी बहुत थी ওটাতে অ্যাক্টিং। লাড্ডু ওর ক্যারেক্টারটার নাম, আর এই লাড্ডুর অ্যাক্টিংটা করে ও ভীষণ খুশি হয়েছে। अरे दादी, आप क्यों ये सेस कर रही है? गेम तो मैंने जीता। अरे तो क्या, अपने पोते से हारी हूं ना, शान की बात है मेरे लिए, समझा? शान की बात। वाह, कितना अच्छा खेलता है तू। আর আরেকটা স্মুদির কথা আমি বলবো, সেটা হচ্ছে মার্কস মার্কস মার্কস। সেটাতে অ্যাক্টিং করেছিল আমার বেস্ট ফ্রেন্ড গঙ্গোত্রী।
আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে গঙ্গোত্রী বা চেনা জানা লোকজন ছিল বলেই নয়, মার্কস 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 অসম্ভব যুগোপযোগী একটি শর্ট ফিল্ম। আমার মনে হয়েছিল যে এই যে মার্কসের পেছনে যে ইঁদুর দৌড়, সেটাকে এত সুন্দরভাবে এত অল্প পরিসরের মধ্যে দেখানো হলো, যেটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। My favorite smoothie Saturdays. Very, very difficult for me to choose because I've been there from the beginning. And if not blood, sweat and tears, definitely a lot of sweat, but a lot of fun and laughter along the way. I've enjoyed every moment of the journey. Even then, I think I can narrow it down with a lot of difficulty to two that I'd like to talk about today. One is vitiligo. Whenever Samudra asks me which my favorite smoothie is, vitiligo immediately comes to mind, apart from the others, as I said. Obstacle 5. Depression personal, and Obstacle 6. Depression professional. Many think that vitiligo leads to depression and anxiety, hampering personal and professional life. And while this is true for many people, I am fortunate that I do not have depression. I try and balance my personal life and professional, just like any other regular person. But let's be out there with the people who are suffering depression due to this or any other reason. Now, Vitiligo, there's something special about that movie for me. To me, it's a classic. Leaving aside the cause, the way the film was picturized, the narrative flow, the play of light and dark, this is not cliche. If you look at the movie, there are very different things happening at different planes in that movie, a lot of emotion. So Vitiligo, yes, is very special for me, and I think that was picked up because Radio Bangla picked it up. We have not done any marketing, we haven't done any aggressive going out there and trying to attract audiences, but Vitiligo managed a niche audience of its own, which was very, very supportive and appreciative. The second one, if vitiligo is from the so-called older lot, the second one is absolutely fresh, taza, which is zodiac signs. Of course, a topic which most of us probably is interested in. We all sneak a peek at the newspapers every now and then. Now, Samudra has a team, and in that team there are some very talented scriptwriters. I think amongst them, perhaps the most intuitive in a way, and she definitely has a way with words, the maturity, is Manjulika. She's the one who wrote the script, and when I read it, I thought it was brilliant. You think I'm going to kiss or hug a stranger soon? Yo, don't sweat it, buds. Not kissing or hugging any stranger during the times of COVID-19. Gotcha. But tell me something, does everyone's reason have to be clear around to others constantly? Geniuses get called mad, weird people get called weird, and if I'm weird, if I'm stubborn, so be it, you know? Sorry? I didn't get your full sentence. You see, I'm preparing for my company's internal exams. I'm going to be in the MD's chair in a few years. I'm very sure of that. Samudra had planned it out with all the clothes laid out for the different sun signs, the looks thought of, and what was even more fun to me was because we did a lot of things with this. I mean, you know, I didn't have too much, but I took makeup up. We tried to give different skin shades, tones, different hairstyles, different facial hair, the clothes too, and the way he carried himself, the gait, all that was thought out. Samudra picked up or thought of people we know who belong to the different sun signs, and he narrowed in on 2 characteristics per person, which is basically what he tried to portray. So when I was watching him as he acted, I could actually see those people come alive because I know them pretty well. So that was great fun, watching the different sun signs come alive on screen. So this is basically why I like vitiligo and zodiac signs, the best amongst all. So my personal favorites would be support vitiligo, age is just a number, zodiac stereotypes, and procrastination. Though they're all my babies, so it's hard to choose. Now, slightly diverting from this topic, last week, my city, Kolkata, witnessed a Cyclone Amphan, which devastated the city. Some people lost their lives, many people lost their homes, and some people are still struggling to get electricity and thereby water supply.
Some of my juniors from my school are actively involved in a fundraiser to raise funds for the state and the affected people from the aftermath of this calamity. So if you wish to, you can go ahead and contribute. My juniors inform me that the proceeds will either go to one of two verified NGOs or the State Relief Fund. Coming back to Smoothie Saturdays, what is the future plan for Smoothie Saturdays and my YouTube channel, Mr. C? Well, I want to make at least 100 episodes and then we can take a call based on viewers' feedback, whether to continue or change the content type. If you still haven't watched the Smoothie Saturdays, you can visit this playlist and go and binge watch the 50 plus Smoothie Saturdays short films during this lockdown period. Do have a high tide week, not just weekend. Here's Mr. C signing off.